great movie or sometimes just having great conversation. Nice, thank you. Wow, I feel very validated. Yup, that's me with Alia Bhatt, the biggest Indian Bollywood actress. But how did I get here? This all started 5 months ago. मैं बस बैठा हूँ आराम से watching Netflix और मेरे को 1 बजे कॉल आता है कि अगस्त्य कल सुबह अगर तेरे को लाइफ में सच्ची कुछ करना है तो यहाँ पे 9 बजे पहुंच जाना। आई एम नॉट लाइंग, इट वाज 9 बजे ओनली। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। मेरे को कॉल आया कि अगस्त्य टुमारो देयर माइट बी अ चांस फॉर यू टू शूट विद आलिया भट्ट एंड फ्रूटी इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, बट यू नीड टू बी हियर एट 9 o'clock. We don't have any more details. We don't know what's gonna happen. We don't know what we are gonna shoot. But if you want to be in a video with Alia Bhatt, even a 1% chance, कल सुबह 9 बजे यहाँ पहुंच जाना। तो मैंने कॉल किया, अरे भाई कल सुबह 9 बजे तैयार रहना, लेट मत होना, तेरे को मार दूंगा। We have to go to shoot with Alia Bhatt tomorrow. और हम सबने देखा है that you know a lot of creators were collabing with like Bollywood celebrities to promote movies and different things. But in my head मेरे को always क्या था कि I also wanted to do such a collab, but I don't know, मेरे दिमाग में वो थी कि मेरे को I want to do it with the biggest. Through some way of life यार that this opportunity came to me. तो कल सुबह मैं कल सुबह मतलब वो दिन के कल सुबह मैं उठाऊं सुबह और मैं फटाफट शैम्पू वैम्पू करके जा रहा हूँ, शेव वेव क्लीन शेव की एकदम अच्छा दिखना है भाई। आलिया भट्ट के साथ शूट अगर हो रहा है तो आई नीड टू लुक द बेस्ट। लाइक यू नो उनको भी लगना चाहिए कि ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये राहा की मामा की पोजीशन लेने आया है। सो यू नो दैट वाज द वाइब। नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं। सो आई हैव रीच्ड देयर इन द मॉर्निंग एंड वी बेसिकली हैड टू सिट देयर बिकॉज़ आलिया वाज देयर शूटिंग फॉर फ्रूटी। दैट वाज लाइक द मेन रीजन। आई थिंक 5-5.5 घंटे हम उधर बैठे थे। सो 5.5 hours वी आर जस्ट सिटिंग देयर पेशेंटली वेटिंग कि यू नो आलिया का एड फिल्म है या ऐसा कुछ भी है तब शूट होगा। बेसिकली ये टाइम पे हम उधर, एक तो फ्रूटी का शूट है तो सब जगह फ्रूटी पड़ी हुई है, तो हम 2-3 फ्रूटी चक कर रहे हैं उधर आराम से बैठ के। We went through a lot of concepts यार। I don't know if I'm allowed to tell you some of the other concepts we went through, but I'm gonna do that because YOLO. So we went through a lot of concepts where Alia would, you know, maybe give me a dare that I would do. और ideas थे कि I was literally ready, मैं कुछ tattoo करवा लूँ। Like Alia Bhatt told me to get this tattoo. ये भी concept idea था। Like हमारे पास ये भी idea था that we play Never Ever Ever, the series that you guys love on this channel with Alia Bhatt. Like भाई कितना मजा आता अगर आलिया भट्ट मेरे को कुछ सवाल पूछ रही है और आलिया भट्ट मेरे को अगर एक्सपोज कर रही है Never Ever Ever में। सच्ची बोल रहा हूँ, ऐसे एक्सपोज होऊंगा ना मैं तो मैं खुशी खुशी एक्सपोज हो जाऊंगा। मैं ऐसे एक्सपोज होना चाहता हूँ कोई दिन, बट लेट्स सी, यू नेवर नो, वापस भी हो सकता है। बट ये आइडिया फिर कैंसिल हो गया बिकॉज यू नो क्या पता मेरे एक्सपोज होने के चक्कर में आलिया अभी कुछ हो जाता। सो वी वर लाइक नहीं, ये आइडिया नहीं करना, लेट्स बी सेफ अ लिटिल बिट। सो इन दिस 5.5 hours आई वाज ऑब्वियसली सीइंग आलिया पीछे से, बट लाइक शी वाज लाइक एटलीस्ट 50-70 meters अवे क्योंकि सेट बड़ा था। दे वर शूटिंग, क्रू मेंबर्स वर देयर, कैमरास वर देयर। आई हैड नॉट लाइक सीन आलिया अप क्लोज एंड ब्रो आई हैव बीन अ आलिया भट्ट फैन सिंस स्टूडेंट ऑफ द ईयर, her debut movie, and it's finally time. The team is all aligned. Everybody's like, okay, Agastya, are you ready, Alia? But you know, Alia's ready right now. We're setting up the 2 chairs. You know, we want to keep it very candid कि ऐसे BTS type interview है। सब कुछ setup हो गया है और फिर मैं एक टेंट जैसे में बैठा था, okay? वहाँ से like, Agastya, are you ready? Then you come. तो I was like, is this actually happening? क्योंकि I was like कि भाई अब तक confirm नहीं था ना कि हम करेंगे या नहीं। Literally ऐसा भी हो गया था that we didn't know if we'll actually end up shooting with Alia also or no. क्योंकि time was going by, you know, fixed hours होते हैं crew के, you know, आलिया के सब के। हम तो क्या है भाई, हम तो पहुंच गए थे, हम तो वेले हैं। कल सुबह 1 बजे कॉल आ गया, हमें तो आलिया भट्ट के साथ शूट करने मिल रहा है। Anyway, मैं उठ के गया हूँ एंड bro, when I saw Alia up close, bro, she is so pretty. Like, I can't even explain it. Like, I was actually in shock because I've seen her in so many movies, on interviews, Coffee with Karan, Instagram, Reels, YouTube, everywhere, on billboards. It's Alia Bhatt, bro. But bro, when she's in front of you, she is so pretty and she's so sweet also. I'm gonna be honest, I was in shock ki, is this reality? Is this actually happening? So, हमारा basically BTS interview था, right? But BTS का BTS खाली मेरे को पता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। So we have sat there and you know while they were setting up the lights and the camera and everything, we had like a good 7 to 10 minutes where Alia and I just were talking. She was asking me about my day 1 tattoo. I'll play the video right now. And it's like a reminder that you know in the future, no matter what happens, hopefully I become successful. Every day I want to work like it's my day 1. How nice. Sir? Very lovely.
she was genuinely interested in it. In some way, I also got some really nice advice from Alia in the BTS, which I think she was very sweet to share. So Alia, if Alia watches the YouTube videos, thank you, Alia. So then everything was ready, camera, lights, everything is set up, and then we did the main interview where we spoke about Fruity Minis and stuff like that, which I'll play at the end of the video. वो conversation भी हुआ, and then the night before when I got the call, I had one goal. अगर मैं आलिया भट्ट से मिलूंगा, I want to take one picture with her in this heart pose that she does. I'll put a couple of pictures here of her doing that pose. It would be mad to get a picture with Alia Bhatt, who does that pose a lot, where I am doing this and she is doing that. That picture would just be so cute. And we managed to get that post. And oddly enough, मैं जब आलिया को बता रहा था after the interview that Alia, do you mind if I get this picture? She's like, why? I was like, you have been doing it in your pose so much, so I thought it's your pose, you like doing it. I don't know, उसने बोला था I don't do it intentionally, I just do it. So I was like, but can I get it? She's like, yeah. So she was also very cooperative like that, and we ended up getting this very, very cute picture, which has gone viral on Instagram. Or this entire thing has gone viral on Instagram. That reminds me, if you don't follow me on Instagram, at Agastya Shah, go follow me there right now. But yeah, that was the entire interaction with Alia and how the entire thing happened. Literally in a span of 18 to 24 hours, this entire thing has happened since I got the call, and it was probably the most fast-paced, I don't know what the hell is happening in life 24 hours of my life. क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, if you know something big is going to happen कि एक वीक पहले से पता है ये दिन तुम शूट करने वाले हो, तुम मेंटली प्रिपेयर्ड तो हो सकते हो ना. मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था कि मैं कल सुबह आलिया भट्ट को मिलने वाला हूँ. ये हाउ क्या. बट या दिस वाज द इंटरव्यू. आफ्टर दैट मैं लिटरली 10 मिनट वापस टेंट में जाके बैठ गया हूँ. ये प्रोसेस कर रहा हूँ कि मैंने 4 साल पहले कंटेंट बनाना शुरू किया था, एंड आई वुड हैव नेवर इवन फैथम्ड और लाइक सोचा भी नहीं होता कि मैं 4 साल में या कभी भी आलिया भट्ट के साथ सेम रूम में भी होऊंगा, लेट अलोन मैं उसके साथ एक वीडियो बनाऊंगा. जेन्युइनली दिस वाज लाइक अ ह्यूज बकेट लिस्ट आइटम फॉर मी टू मीट लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, एंड या ब्रो, लाइक मैड हो गया मैं. आई कीप टेलिंग यू, इफ यू आर इन द एक्ट फैम, चेज योर ड्रीम्स, एंड दिस इज प्रूफ. लाइक I do these things because I want to show you guys that I am just like you and I am also chasing my dreams, and if I can do these things, like I have no reason to be in the same room with Alia Bhatt or even shoot with her. It's only because I know my dream and I go after it, and you guys can do it too. And also this happened like I said 4-5 months ago. So भाई तुम्हें पता नहीं है, मैं ऐसा आदमी हूँ कि अगर if something big happens in my life, I want to share it with you guys वही दिन पे, वही second पे. But I couldn't because the brand was involved. We had to get approvals before anything goes up. Bro, I've been dying to share this news with you कि इतनी बड़ी चीज हो गई है मेरी लाइफ में, and I can't tell you guys that I'm the most excited to tell. But यार मैंने कैसे इस बात को सीक्रेट रखा है ना मेरे Instagram पे, YouTube पे, and I'm going by life normally कि हाँ चलो कुछ हुआ नहीं है. It's not like I've just shot the biggest collab for a creator or in general for me right now. Like I'm just going by life कि चलो हाँ नॉर्मल लाइफ है. नहीं, मेरे गैलरी में 5 महीने से आलिया भट्ट के साथ ये फोटो पड़ी हुई है. मैं कभी भी पोस्ट कर सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था, बट मैं नहीं कर सकता था. Like you have no idea मैं कैसे इसको सीक्रेट रखा है. Like mad. I respect myself for keeping this a secret for this long. But without any further ado, I want to say thank you Fruity for making this happen and the entire team involved. And here is the final video that we shot with Alia Bhatt. So if you could be part of the Fruity Mini world, which Mini would you be? The elephants, tigers, etc. But I think the Yeti. Why the Yeti? It's an interesting choice. Because you know the Yeti is a little like the character, the way they've built it is he's a little like spontaneous, he's a bit random. He's kind of like up to mischief all the time. Not that I'm very mischievous, but I resonate with the random spontaneousness of the Yeti. Yeah. And I find that he's very like cute and unpredictable. What do you think goes with my personality the best? In the 2 minutes that we've been talking. In the 2 minutes that I've just gotten to know you, Agastya, I think you're very wise. Wow. Hence, I think the elephant mini will do That's really a first. well. That's a first. Because elephants are the most beautiful animals and they're very wise. Thank you. I think because you've known me for 2 minutes, you think I'm wise.